Today I'm sharing 5 different lip combos with you. These combos are easy, affordable and perfect for daily wear as well as special occasions. Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Shabista and let's start with our first lip combo. I'm starting with Swiss Beauty ka lip liner in the shade Maroon 2. The texture of this liner is creamy but not too slippery, so it glides easy without smudging everywhere. Even though it's look maroon in the pencil, on the lips it gives a soft brown tone which make it a great base for nude lipstick. और फिर हम इस लाइनर को अच्छे से स्मर्ज कर लेंगे सो दैट वो लाइनर ज़्यादा हार्श ना दिखे। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ हिलरी रोडा का लिपस्टिक इन द शेड coffee date. This lipstick has a soft creamy matte texture. It's not extremely matte, so it doesn't dry out the lips. The pigmentation is good. You get proper color in about 2 swipe. This set is perfect for college, office or everyday wear. After applying the lipstick, I lightly blotted it with a tissue paper to remove the excess product and make it look more soft and subtle. ये लिप कॉम्बो बहुत ही अफोर्डेबल है। 129 और 130 की लिपस्टिक है एंड 62 की लिप लाइनर। फॉर द सेकंड कॉम्बो आई एम अगेन यूजिंग स्विस ब्यूटी का ही लिप लाइनर इन द शेड बर्गंडी 9. This one is slightly deeper than maroon 2 and gives the lip more defined and sharp outline. The finish is more one of the matte side, so once it sets it doesn't move much. On top of this I'm applying Blue Heaven Cookie Crush lipstick in the shade Pudding Times. The texture of this lipstick is buttery and creamy, very comfortable on the lips. It works really well even on dry lips and doesn't highlight cracks. This combo is perfect if you like fresh, soft, everyday lip colors that doesn't look too bold or overpowering. It working really well for daytime makeup, casual outing and even simple office looks. नेक्स्ट कॉम्बो जो है वो मेरी एब्सोल्यूट फेवरेट लिप कॉम्बो है। मैं इसे हमेशा अभी कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ। मैंने इस कॉम्बो को क्रिएट करने के लिए शुगर की ब्राउन कोल पेंसिल यूज़ की है। येस, कोल पेंसिल। नाउ ऑन टॉप ऑफ दिस आई एम अप्लाइंग द मार्स ब्लर लिपस्टिक इन द शेड 04. This lipstick has a soft blurred matte mousse like texture, and as I'm applying it, it feels super lightweight on the lips. This shade is giving the perfect deep brown tone, and paired with the brown kajal, it's adding so much depth and richness. It's making the lips look fuller and more even. If you love brown lips but don't want them to look too flat or dry, this combo is definitely worth trying. Next combo के लिए I am starting with the Swiss Beauty का lip liner in the shade dark chocolate. This liner has a slightly deep brown tone. Swiss Beauty की lip liner की एक किट आती है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आपने वो किट ले लिया ना, आपकी लिप लाइनर लाइक लिप कॉम्बो सॉर्टेड है। उस एक बॉक्स में आपको डिफरेंट कलर्स मिल जाते हैं, तो आप डिफरेंट डिफरेंट लिप कॉम्बोज क्रिएट कर सकते हो। नाउ लिपस्टिक के लिए आई एम अप्लाइंग द कलर केमिस्ट्री लिप एंड चिक क्रियॉन इन द शेड हनी. This shade is giving a very soft nude tone on my lips, and paired with the dark brown liner, it's creating a beautiful contrast. The texture of this crayon is creamy and balmy sort of, so it's feel very comfortable while I'm applying it. It's not tugging on the lips and it's ब्लेंडिंग रियली वेल विद द लाइनर. अगेन इस कॉम्बो को थोड़ा सॉफ्ट दिखाने के लिए मैंने टिश्यू पेपर से इसे ब्लॉट कर लिया है. दिस वन इज गिविंग एफर्टलेस एवरीडे न्यूड लिप्स. आई एम लविंग इट. For this last lip combo, I am creating a cherry cola lip, which is slightly bold, glossy, and perfect for evening or festive makeup. I'm starting with the Swiss Beauty lip liner in the shade Maroon 2, as I am outlining my lips. और lower lips को line करने के लिए मैंने dark chocolate shade use की है, Swiss Beauty की ही. On top of this, I'm applying the Sugar Crayon lipstick in the shade Cherry Darling. This shade is giving a beautiful cherry red tone with a brown undertone, which is exactly what gives that cherry cola effect. थोड़ा सा स्मूथ दिखाने के लिए टिश्यू पेपर से इसे ब्लॉट करेंगे. It's looking bold but still wearable. To finish the look, I'm adding a little bit of Swiss Beauty lip gloss on top, removing the excess gloss. बस हमें थोड़ा सा ही चाहिए, और ये ग्लॉस ऐड करने से आपकी लिप्स फुलर, जूसियर और इट्स एडिंग दैट परफेक्ट शाइन विदाउट फीलिंग sticky.
This combo is perfect if you like glossy statement lips that stand out but still looks classy. This is the final cherry cola lip looks, and it's looking so juicy, bold and glossy. All the products I have used in this video are mentioned in description box below. If you enjoyed this video, please do like, share and subscribe to my channel, and I'll see you in my next one. Bye.